Okay, so today we are going to have 19th lecture. It is fourth makeup class, but because of Eid holidays, we are required to take two more makeup classes. So for next 2 weeks, we'll continue Tuesday's lecture. Any query on this aspect, please let me know. Okay, so today we are going to start JavaScript. JavaScript, and this is the outline for today's lecture. Introduction, output, statements, comments, variable, let, keyword, constant, keyword, operators, few data types. So, what is JavaScript? JavaScript is the world's most popular programming language as per the survey of as per recent survey. JavaScript is being used as a programming language of choice for web and executed on web browsers. तो इसे वेब ब्राउज़र पर ही एग्जीक्यूट होती है, but it is also a full-fledged programming language and can execute it on a separate engine as well. For example, Node.js. And JavaScript is easy to learn, especially once you're already familiar. You have taken the course of computing and you have already covered C, and most of you would have also covered C++. But if you understand the syntax of C, so its syntax is by and large same as C, but there are some differences as well. So we will see as we move through our journey of JavaScript, we will see the differences as well. But the basic programming concepts are same as you have learned in C. For example, if we talk about loops, we talk about data types, variables, and stuff like that. Okay, so first of all, let's see few slides on just an overview of JavaScript capabilities. JavaScript can change HTML content. So if it runs on the browser, then it will be linked with any HTML page. Either it will be part of HTML page or it will be linked to the HTML page. So it has capability of changing any of the content of HTML page. So let's see our demo. So this is one statement. Document.getElement by ID demo inner HTML hello JavaScript.
So you can see it's an HTML page and there is a body in the page. In body we have a paragraph element. It has ID of demo, and then there is some content. So this is basically paragraph with an ID demo. Now with the button, what we are going to do, on click event, we are going to change the content of paragraph. I repeat, we are going to change content of paragraph. How this code, and the code you can see it is in a single quote. It may be in a double quote or a single quote, but the code is supposed to be in some quotations, single or double. And the event is on click. So what will happen once we will click a button? On click event will be triggered, and this code is going to be executed on button click. So let me click it. So you can see the content of paragraph has been changed. Now how it has detected or found the paragraph. So there is a method get element by ID, and we know ID is demo. So with get element by ID, we are specifying ID name in double quote. We can also specify it in a single quote. So we are specifying it in a double quote and the same ID demo. So what will happen with this statement? It is going to extract the document that element of HTML element which has ID demo. So that element is paragraph. After that, dot with dot inner HTML, what will and is equal to the again some string. So it is going to replace the content of P or paragraph element. So this is what has happened here. It has been changed to hello script.java. This is original content which you can see here. You can say that it's a hard-coded content, but once we press the button, this content hello JavaScript content is going to be the new content of paragraph. So it has changed. Now same demo I'm going to show you on VS Code. So this is, it's the same code, change content.html. If I let me open it with F1 window, and this is the page which has been executed on the live server, and the same content, once I'll click it, it is going to replace the code, and the code which is replacing it is this one. This code is being replaced. Once more, I am going to open it in Chrome. So let me open in Chrome. This is the content which has been, same content is being opened in Chrome, and
I've opened by after right clicking, I've opened a inspect window. Now in expect window, the same source code is visible to you here, and this is what can JavaScript do, and JavaScript can change HTML content. This content is going to be changed once I will press this button. So just look at this content. It is going to be replaced here. So I click, and here you can see the content of P has been changed. Now it is hello JavaScript, and the same is visible here. Any question on this demo? No, sir. Okay, let me give you a little demo of Node.js as well. First of all, you should know that JavaScript files are saved with .js extension. Here you can see I have created an extension test1.js, and there is a code. This is a JavaScript code. So with Node we can execute any pure JavaScript code. But what is Node? Node is an engine which on which JavaScript code can be run independently without any browser or any other tools. So first of all, let me show you the home page of Node. So this is nodejs.org. It is free. Node.js is a JavaScript runtime built on Chrome V8 JavaScript engine. Okay, it is free. Generally, LTS version is downloaded because it is expected or supposed to be stable. So if we click it, it will ask the location and it will install. Now I have downloaded it on in application, and here you can see this is a download file, Node version 14.6.1. Once we just double click it and it starts installing. If you want to change its default installation folder, you can. If you don't want to change, you can install on default location, which is a C drive. This kind of a window comes up. Since I have already installed, so it is asking me whether I want to change something, or I want to repair, or I want to remove it. So we just have to click 3-4 buttons and it will be installed. So it's very simple to install Node. So the recommended is that you should install LTS version of Node.js. Now let me show you Node in action. For Node to be in action in the VS, you will find a terminal window. In terminal window, there is a command window. You can open a command window, and this here command window is opened. If I write here node hash -v, so it is going to tell me which version of Node is installed. So currently version 14.6.1 of Node is installed. Now if I have to execute any file, then I have to first of all write node, then space, and then name of the file. Here I have a file with JavaScript extension. It is
test1.js. So I have to write test1.js. Once I'll enter, it has printed hello world and a colon 5. So how it has done it? First of all, as you can see, there is a statement console.log hello world. So whenever you want to print something on a console, it is a command window, then you have to use the command console.log, and then within that you can write a string. So hello world is the result of first statement console.log hello world. Then I am declaring and initializing three variables. One variable is a is equal to 5, b is equal to 6, and c is equal to a plus b. It means that a will be 5, b will be 6, and c will be 11. And then I am using, just for a sample purpose, I am using an if statement. It is a typical if statement as you have studied in C. I am the condition within a two if statement should be true. So instead of doing some sort of comparison, I am straight away writing true. So it means that this line of statement is going to be executed. If I write false here, then it will be false, and thus the statement which is written in else, it will be executed. So because it is true, then it should print A. So here you can see it is written A5. So A, the value of A is 5. So it is first of all label for A and then value for A. It is A colon 5. Any question on this aspect? Please don't hesitate to ask the question. Okay. Okay. Now, since I have written here node space file name, I can do some sort of shortcut as well. For shortcut, I have to install an application, and that is Code Runner. You can see Code Runner is already installed, so I am getting this symbol, setting symbol. If and all applications which are not installed, here we can see the keyword of install is there. So I have installed Code Runner. By installing Code Runner, what will happen? There will be an arrow right on the top right corner, and here you can see there is an arrow. So if it is a JavaScript file, I can straight away press this button. It is going to be executed in Node engine. Let me press it. So here I have pressed it. So you can see the output goes into the output window. First of all, we were playing in terminal window, but its output will not go into terminals window, rather it will go to output window. So in output window, you can see it is written hello world and A5. Let me clear output and press run button once more. So here I have pressed run button, and you can see hello world and A is equal to 5 is displayed. So what we done? We have installed Code Runner, and it will not run a HTML file. It will run only JS file, which has extension of .js. So once I pressed
code runner, the file is executed and we got some output in the output window. Any question on this demo? Any question on this demo? Okay. So we were saying that JavaScript can change HTML content. Here I have given you demo of this code and it has replaced the content of paragraph which has ID demo. Another capability, JavaScript can hide HTML element. Okay, sorry, one I missed. JavaScript can change HTML attribute value. For example, there is an attribute source and it has a value picture bulb of .gif. So we can replace the attribute value of any attribute, for example, source. In this example, JavaScript changes the value of source attribute to an image tag. Okay, let me show you its demo. Here you can see the code and there are two buttons. This is button 1 and this one is button 2. Button on click and button on click. So within a button tag we want to replace some content. Actually we want to replace an image. An image is required to be replaced in the as source attribute of image tag, which is source is equal to picture bulb of. So by default, bulb of GIF is being displayed. Once I'll press turn on light, so you will see that in the source the attribute value has been changed. Now it is picture bulb on GIF. Again, I'll press turn off bulb. Then it has again changed the attribute value source. So now we can see an off bulb. If I press on bulb or off bulb. But content here is changing. Attribute value of source element is changing. How it is possible? Because what we have done use Java element by ID my image, and for image tag the ID is my image, and then we have written dot source is equal to picture bulb of dot gif, and that's all. So on button click it is going to change the source of source value of image tag. Any question on this demo? Okay. JavaScript can change HTML style. So we can also change the style as well. As you can see the syntax, we are extracting an element by ID. We are extracting an element which has ID of demo, and then we are writing dot style dot font size is equal to 35 pixels, and just by writing dot style dot font size, it is going to replace the original font size with font size 35. Okay, let me show you its demo.
again demo in notes file. Here it is change style. So this is the code of change style, and I can run it on node on VS Code. Okay. So here we can change the style. Let me run it. Rather, I'll have to just click the button. So as I have clicked the button, the font size of paragraph of with ID demo has been changed. Now the same content is with 35 pixels. Any question? No, sir. JavaScript can change HTML style. This demo I already given. Now, JavaScript can hide HTML element. For hiding HTML element, we are going to use the keywords dot style dot display is equal to none. So for any element, if we make it display value none, it gets hidden. And if we make display is equal to block, then again it gets visible. So this is code. Let me show you some other change hide element. So here you can see, let me run it. So I have run it, now I am clicking. So after clicking, what has happened? The content of paragraph has vanished. And here is P. Okay, let me run it. And if I click it, it vanishes. And let me show you on hide element. Here you can see the code, and on left side there is a button. After clicking, what will happen? Its content should change. So here you can see JavaScript can hide on HTML. If I press, this content will be replaced for paragraph. Here you can see now the content now is style is equal to display none. And because of this style, P is now hidden. Let me show you do some experiment. Okay, you can see that let me reload it, and I right click here, edit attribute, no, edit HTML. So this is the content of HTML page. Let me copy it, Control C,
and I can change content of HTML page right from the console as well. It is just for debugging and testing purpose. Document dot get element by ID. Now I'll write the ID, which is demo, and then inner HTML is equal to my new content. Let me run it. So you can see that in the P element, the content of P element has been changed. Now it is my new content. Let me copy it here. If I write again document.get element by ID by demo dot inner HTML, and if I press enter, the existing content of web page is being displayed. So it means that if I give some string after is equal to sign, then that inner HTML is going to replace existing content. If I do not give any statement, I just write up till inner HTML, then the original content is going to be displayed, which and original content is my new content. Any question on this demo? I hope this demo is clear. If not, it is not, let me know. That we can change and test JavaScript code from the console of Chrome browser, and such facilities are also available in other browsers as well. Any question on this account? No, sir. Okay. So up till now, I have given you some important information. First of all, I have introduced you to with the Node runtime engine, and I have shown you the download location and which version is to be installed. And then I have given you the demo of Node, how to run any pure JavaScript file with Node. Either we can write textually Node space and then JavaScript file name, or we can install a runner, code runner app on Visual Studio. Then there will be a run button. Once we will press the run button, the code will be executed, and the code, I think he is working hard. Okay. Uh, okay, so we have given you a demo of hiding element. And again, if we want to display an element, then we have to write style.display is equal to block. Then with this, the element, any element can be, existing element can be displayed. So there, the element demo, which already exists on HTML page, will be displayed. Once we will set it property to style.display is equal to block. Okay, so
Okay, now let's move forward. JavaScript display properties. JavaScript display can display data in different ways. One is writing into a HTML element using inner dot HTML. So up till now I have given you the demo of inner HTML, with all the previous examples. There are three other ways as well. One is writing into HTML output using document.write, and then writing into an alert box using windows.alert. Okay, then writing into the browser console using console.log. So again, console.log demo, I have already given you the demo of console.log as well. And we saw that once we write console.log, then the data or content is printed on the console. And a Visual Studio, as we saw, once we wrote, if I run it, then I'll get the print on the console. This terminal is command console, but if we write here node.js, for example, node.js, then it will print on console. If we use this arrow button, it will print on the output window. And but if we make use of this Chrome, then this is the console. So if we write something in the page, and if there is some statement like console.log, then here the content is going to be printed. Here the content can be printed. I can straight away use Windows like statement like this, console.log hello world. If I press enter, hello world has been printed. But the same statement can be placed in the page as well. And once page will be loaded, it is going to write the console.log. Okay. Or and let me change the content of the same page. Here is the page. If I write here console has to be within script tag. To add a script tag, only then I can write JavaScript. So this is a script tab. Now here I can write console.log hello world. If I save it and let me come here, let me clear it, let me reload this file. So I have loaded this file and there is the script tag console.log, and you can see in the console hello world has been written. Similarly, there is windows.alert. If I simply write here windows
window dot alert. I write here hello world. If I press enter, you can say an alert is being shown on the window, and same content can be placed in the page as well. Here I place it in the page. I am saving it. Now I'll reload the page. So hello world has been written as well as alert is also being shown here. Okay, so one is missing. Other one is document.write. If I write here, first of all let me test it here. Right. Let me press enter. If you see, complete code of the page has vanished, and only minimal code is there, and in the body it is written hello world. So what will happen, that once we load, if we write document.write after loading the page, it will replace everything with the content. And if we write document.write before loading of paper, then the page, then it will other page content will also remain active. Let me copy it and place it in the same script file, document.write hello world. Okay, semicolon is optional in JavaScript. Okay, I am writing it. It's a good practice to use semicolon like C, but it's optional. And but it is recommended to, let me reload the page. So you can see here it is written hello world, and then there is a script windows.alert and document.write. It should have. तो शायद सेव नहीं किया होगा। Can I? जी क्या हुआ? मैं कह रहा था शायद सेव नहीं किया होगा। सेव नहीं किया शायद, ठीक कह रहे हैं, हाँ सेव नहीं किया होगा. You are right. Let me reload it. So there is document.write, and this document.write has written hello.word in the page. Here you can see it what it has done. It has written it on within a page, web page, not the console. Console.log is writing in the console. Alert is creating a window, opening a alert window, and document.write is writing within that web page. Here it is written web page. Okay, so demo is complete. Any question?
Okay, so now I have given you all the 4 demos. This one, display possibilities. Let me skip it. Now coming on to JavaScript elements. So these are various keywords in Java. Some, rather most of these are familiar to you from the C background. Break, continue, debugger. Debugger is advanced. Perhaps you don't need it at this level. Do while, for, function, if else, return, switch, try, catch, variable. The var is variable. Variable keyword, I think it's not in C. Uh, we'll discuss it in subsequent slides. Okay, commands. Commands are just like C. There is a single line command and there is a multi-line commands. This is multi-line command and this is a single line command. No difference. Then coming on to variables. JavaScript variables are containers for storing data values. And in this example, price1, price2 and total are variables. So price1, name of variable, and instead of giving on a specific data type like char or int or float, we are just saying var. So it will be a variable. Once we will initialize it with a value, then at that point in time it is going to decide that what type will price1 variable will have. So here it will have a data type of numbers. There are two broader data types, rather three broader data types in JavaScript. One is number, all integer, float, everything regarding number is covered in number data type. And other one is string, all character and strings are covered in data type string. And then is a boolean, which is either true or false. So this slide is showing you example of numbers data type. Okay, now JavaScript variables and variable declaration. We can declare variable without initializing it. Here it is an example of declaring it without initializing, and later on we are initializing it. Once we will initialize it later on, then it will be assigned a data type string. I hope it's clear. Okay, let's move forward. JavaScript is a case sensitive JavaScript. JavaScript identifiers are case sensitive, and just like C may be case sensitive. It means that there will be a difference between last name and last name, because here is name is in small caps and here and name n is uppercase. So these are two different variable names. Okay. Then there is some self-study. You can have a look on it. Now there is one statement, JavaScript let statement. Let is not in C. Let statement is for declaring a variable. So let is also let I is equal to 5. This is one way of declaring variable. Other one is var I is equal to 5. So we can use let and we can use var. Let has a limited scope and var has a global scope. Using let in a loop. For example, here we are using let in a loop. So once it comes out of the loop, the value of I should be 10. क्या ख्याल है जी? जब लूप से बाहर आएगा और लूप पूरा चल जाएगा तो I की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10 ही होगी सर। 10 होनी चाहिए.
लेकिन जब हम इसको फॉर लूप से बाहर आके आई की वैल्यू को हम डिटेक्ट करेंगे तो ये आई की वैल्यू 10 नहीं होगी, बल्कि ये जो आई की वैल्यू जो हमने ये फॉर लूप से बाहर इनिशियलाइज की हुई है वो वाली होगी। ठीक हो गया। तो लेट से ये होता है कि लेट अगर किसी एक फर्दर ब्लॉक के अंदर लेट डिफाइन करें तो फिर वो उसकी वैल्यूज़ जो होती हैं वेरिएबल की वो लोकलाइज हो जाती हैं। तो दिस इज तो वन ऑफ द यूज ऑफ लेट स्टेटमेंट। अगर हम वी ए आर यूज़ करते हैं तो आई की वैल्यू 10 होनी चाहिए, और ये जब बाहर निकलेगा तो ये वाला अंदर वाला वी ए आर जो है, जो कि लोकल स्कोप वाला वी ए आर है, ये बाहर वाले वी ए आर की वैल्यू को भी चेंज कर देगा, उसको चेंज कर देगा। यानी एक्चुअली ये जो वी ए आर है हम री इनिशलाइज कर रहे हैं आई को इन अ स्मॉलर ब्लॉक, बट इट इज गोइंग टू अफेक्ट द ग्लोबल वैल्यू बिकॉज इट इज डिफाइंड इन वी ए विद वी ए आर। तो अब इसको सी में तो नहीं होता इस तरह, मेरे ख्याल में सी में आपको जो वैल्यू लोकल किसी ब्लॉक में डिफाइन करते हैं तो वो ब्लॉक में ही रहती है। इसमें थोड़ा सा ये लिमिटेशन है जिसकी वजह से फिर लेट को डिफाइन किया गया है। Using VR, the variable declared in the loop redeclares the global variable outside the loop। तो अगर आप इसको ग्लोबल कहते हैं, लूप से बाहर है, तो ये अंदर वाले उसी नाम से भी इनिशलाइज करेंगे तो ये ग्लोबल को जाके इफेक्ट कर देगा। तो इसलिए लोकल स्कोप के लिए लेट को यूज करना चाहिए। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? चले आगे। ओके, लेट फंक्शन स्कोप। यूजिंग लेट इन अ फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमने वी ए आर से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और एक फंक्शन में हम लेट के साथ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन विद var एंड let आर क्वाइट सिमिलर when declared inside the function. They will both have function scope. तो अगर विद इन अगर कोई ग्लोबल नाम ये डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो फिर विद इन फंक्शन इनका बिहेवियर सेम ही होगा। विद इन फंक्शन इसका बिहेवियर सेम ही होगा, चाहे वी ए आर लिख लें या लेट लिख लें। यानी से अगर फंक्शन से बाहर आते हैं और बाहर ये ग्लोबली वी ए आर कार नेम डिक्लेयर नहीं है तो फिर ये बाहर नहीं नजर आएगा वी ए आर, इट विल फिनिश विद इन अ फंक्शन। इसी स्कोप के लिए इसकी लाइफ होगी। ओके, सो कांस्टेंट कीवर्ड, इज देयर कांस्टेंट कीवर्ड इन सी? जी, आपने तो ताज़ी ताज़ी सी पढ़ी होगी, क्यों जी? कोई नहीं बोलता? सर दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा सर। जी क्या? मुझे बोले दोबारा। सर क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा प्लीज। ये जो कांस्टेंट कीवर्ड है ये सी में है? यस सर है। चलें फिर इसमें भी है। तो कांस्टेंट का मकसद क्या होता है कि बस कांस्टेंट जब भी आप कोई चीज़, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पाई, वी आर डिक्लेयरिंग पाई एज अ कांस्टेंट और हमने कोई वैल्यू दे दी इसको। आप उसको अगर री इनिशियलाइज नहीं कर सकते, एक दफ़ा कांस्टेंट जो डिक्लेयर करते हैं उसे री इनिशियलाइज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इसलिए कांस्टेंट को एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ही इनिशियलाइज करना होता है। तो ये दो चीज़ें हैं, सी में भी ऐसी होगा। ओके, देन अगर कांस्टेंट और वेरिएबल का क्लैश आ जाए आपस में, so then what happens? Variable defined with constant behave like let variables except they cannot be reassigned। तो ये अगर हमने एक ब्लॉक स्कोप में कांस्टेंट को डिक्लेयर किया है तो ये भी कांस्टेंट बाहर विजिबल नहीं होगा, जैसे लेट विजिबल नहीं होता। लेकिन लेट को आप री इनिशियलाइज कर सकते हैं,
लेट्स से जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लेकिन कांस्टेंट था जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उससे री इनिशियलाइज आप नहीं कर सकेंगे। यानी कि अगर मैंने कांस्टेंट x इक्वल टू 2 इसके अंदर दिया है, तो बाहर अगर मैं निकलता हूँ इस ब्लॉक से तो मुझे x2 नहीं मिलेगा, रादर x जो ग्लोबली विजिबल है, जो डिक्लेयर्ड x है वो मुझे विजिबल होगा। तो कोई क्लैश नहीं होगा इसका आपस में ग्लोबल वेरिएबल के साथ। ओके, सम ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, these are some operators from C बैकग्राउंड। कोई ऐसा ऑपरेटर तो नहीं है जिससे आप फेमिलियर नहीं हैं? जी, आई रिपीट माई क्वेश्चन, कोई ऐसा ऑपरेटर जिससे आप फेमिलियर ना हो? कोई नहीं बोलता भाई, सोए हुए हैं, सर ये जागे हुए हैं आप? डिफरेंशिएशन वाला जो है ये मतलब ये ये पाइथन वाला, में सी में नहीं है। हाँ ये सी में नहीं है मेरे ख्याल में, सी में नहीं है, ये बाकी सारे हैं। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली पावर है, ये एक्स रेस टू द पावर वाई, ये पावर ये जैसे आएगा अगर करूँगा तो एक्स एक्सपोनेंट वाई, एक्स रेस टू द पावर वाई, ये है। बाकी तो सारे फेमिलियर हैं आप, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सेमी कॉलन भी आ रहा है आपको, सी की तरह ही लगेगा। ओके, देन फ्यू असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इनमें से कोई आप फेमिलियर ना हो सी बैकग्राउंड से? तो इसमें भी सारे ही हैं, बस वो वाला नहीं है, आखिरी वाला। ये वाला आखिरी वाला, क्योंकि ये ऑपरेटर नहीं है तो अदरवाइज बाकी सारे सी में हैं। जी सर। ठीक है जी, जिसकी प्रैक्टिस कराई जाती है आपको सी के कोर्स में। ओके, नाउ कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखें, किस से फेमिलियर नहीं है आप? तो यही जो तीन, एक तो इक्वल टू वाले और फिर जो उससे अगले से अगले वाले। ट्रिपल इक्वल वाला जो है ये इससे फेमिलियर नहीं है आप, ये सारा उसी के बाई नॉट इक्वल टू वैल्यू एंड टाइप। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। एंड ऑन दी राइट साइड देयर आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये भी मेरे ख्याल में वही हैं जो सी में होते हैं। नॉट है और है और लॉजिकल एंड है। और ओके, तो ये देखें, here I am going to explain you. Here we are declaring x as a variable और इसको इनिशियलाइज किया हमने 5 से, तो x की डेटा टाइप हो जाएगी नंबर। ठीक है जी, x की डेटा टाइप यहाँ पे जब हम x डिक्लेयर करेंगे तो इसकी डेटा टाइप हो जाएगी नंबर। अब अगर मैं ट्रिपल इक्वल यूज करता हूँ तो ये फिर डेटा टाइप भी चेक करेगा और वैल्यू भी चेक करेगा, दोनों चीज़ें चेक करेगा। तो वैल्यू जो है x की 5 है और स्ट्रिंग में भी 5 ही वैल्यू है, तो ये इट विल गिव अस फॉल्स, क्योंकि टाइप डिफरेंट है। ये 5 स्ट्रिंग है और x वाला 5 जो सेव किया था वो है नंबर। सो देयर इज अ टाइप डिफरेंस, बिकॉज ऑफ दिस टाइप डिफरेंस वी गेट द वैल्यू फॉल्स। और अगर ये सी वाला इज इक्वल टू यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट में, तो x नंबर है और स्ट्रिंग 5 है, इट विल गिव यू ट्रू, बिकॉज इट इज ओनली चेकिंग द वैल्यू, एंड वैल्यू ऑफ नंबर एंड स्ट्रिंग बोथ इज 5, so that's why it will give us true. Any question on the explanation? हाँ सर।
Okay. Now let's see let's have discussion on some data types. JavaScript variables can hold many data types, numbers, strings, objects, and more, but most often used data types are number, string, and objects and boolean as well. ठीक है जी, boolean को बाद में देख लेंगे. boolean का कॉन्सेप्ट वही है जो सी में है. Variable length is equal to 16, so it will have a data type of number. And if we declare a variable last name with a string, then it will have a data type string. And if this is a syntax for creating an object, so we are creating an object of x. In C point of view, you can call it a sort of structure. एक तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, कम्प्लेक्स डेटा टाइप कह सकते हैं इसको. बट हेयर इन जावास्क्रिप्ट वी कॉल इट ऑब्जेक्ट. सो दिस ऑब्जेक्ट हैज two key value pairs. This is a key first name and it has a value John, and second key is last name and its value is Doe. And this is, it will be called as object. ठीक है जी. ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर टाइप कॉन्सेप्ट है. अच्छा जी, अब द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स. In programming, data type is an important concept, and without data type, a computer cannot safely solve it. अब ये बताएं, अगर हम 16 को वॉल्वो में ऐड करें, सी अलाउ करेगी हमें? सर वो इस तरह की कास्ट कर देगी ना उसे. नहीं, कास्टिंग यहाँ नहीं ना कर रहे, यहाँ कास्टिंग नहीं कर रहे. बगैर कास्टिंग तो सी नहीं अलाउ करेगी ना. जी सर. लेकिन ये अलाउ करेगा, ये ऑटोमेटिकली इन्फर करेगा. और स्ट्रिंग और नंबर को मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इनको कैंकेटिनेट कर देगा पकड़ के. मैंने कहा चलो ऐसी की तैसी तुम्हारी, ठीक है. तो दिस इज गोइंग टू हैपन इन जावास्क्रिप्ट. ओके, नाउ JavaScript data types are dynamic. It means that same variable can be used to hold different data types. For example, हमने एक variable x declare किया. जब declare करेंगे उस वक्त इसकी जो type होगी वो undefined होगी. इसकी type क्या होगी? Undefined होगी. अब मैंने उसको अगर नंबर से इनिशलाइज कर दिया तो उसकी डेटा टाइप नंबर हो जाएगी. अगर मैंने स्ट्रिंग से इनिशलाइज किया तो उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी. ठीक है जी. This is also different than C. C में क्या होता है, कर सकते हैं? नहीं सर, उसमें तो पहले हम डेटा टाइप बता देते हैं. वो बता देते हैं, फिर आगे पीछे नहीं हो सकते आप. जी सर. ओके जी, आगे चलें. जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स. अच्छा, स्ट्रिंग्स आप सिंगल कोट से भी डिक्लेयर कर सकते हैं और डबल कोट से भी डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक हो गया. आगे चलेंगे. JavaScript numbers. JavaScript has only one type of numbers. Number can be written with or without decimals. अगर ये 13.00 कर देंगे तो ये भी सेव हो जाएगा. 34 कर देंगे ये भी सेव हो जाएगा. बोथ आर नंबर डेटा टाइप. फ्लोट और उसमें इंटीजर में कोई पेचीदगी नहीं है इसके अंदर. ओके जी, आगे चलें. बूलियन. So Boolean can only have two values, true or false. Boolean are often used in conditional testing. So for example, these are three variables we have defined: x5, y5, that is xz. If I write a conditional statement as x is equal to y, then I am going to get true. And if I write x is equal to z, then I am going to get false. तो boolean
इसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो देयर इज a data type undefined as well. In JavaScript, variable without a value has a value undefined. That this the type is also undefined. तो अब ये देखिए, अगर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो अगर मैं इसकी टाइप चेक करूंगा कि इसकी टाइप क्या है, तो मुझे टाइप ये रिटर्न करेगा अनडिफाइंड। और इसकी वैल्यू मैं चेक करूंगा वैल्यू क्या है, तो वैल्यू भी अनडिफाइंड होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया यार, this is a console, I write variable car, ठीक है, a variable will be declared। अब साथ ही देखें नीचे अनडिफाइंड लिखा हुआ आ गया। अब मैं कार को लेता हूँ, कार की वैल्यू में लेता हूँ, तो वो अनडिफाइंड ये आ रही है लिखी हुई वैल्यू। अगर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ कार, अगेन इट इज अनडिफाइंड, वैल्यू भी अनडिफाइंड है और इसकी टाइप भी अनडिफाइंड है। ठीक है जी, तो एन एम्प्टी वैल्यू इज नथिंग टू डू विद अनडिफाइंड। अगर मैं ये कार का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ विद एम्प्टी स्ट्रिंग, then it will have type of string and it will have value like this, like an empty string. Empty and null. An empty value has nothing to do with undefined. An empty string has both legal value and a type. ये जैसे आपको पहले भी ये तो रिपीट हो गया गलती से, same as previous slide. Null. In JavaScript, null is nothing. It is supposed to be something that does not exist. You can empty an object by setting it to null. For example, एक हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम, पहली ऑब्जेक्ट की एग्जांपल दिखाई है मैंने एक स्लाइड पे। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं पर्सन के नाम से, एंड इट हैज सम वैल्यूज रादर। नाउ आई कैन सेट दिस पर्सन टू null. So in this way it will get emptied, but the object still exists, but it has a value null. So it can have actual value, an object can have an actual value, or it can have a value null. Okay, any question? No, sir. Okay, let's move forward. There is a type of operator. I've already given you demo. The type of operator you can use in JavaScript, type of operator to find type of JavaScript variable. Type of operator returns type of variable, and or an expression. अच्छा, ये क्योंकि डेटा टाइप इसमें डायनेमिकली चेंज हो रही होती है, तो अक्सर हमें फिर टाइप चेकिंग करनी पड़ जाती है अपनी कोडिंग के दौरान। तो पहले चेक करें टाइप कौन सी है, उस हिसाब से हमने मेथड उस पर लगाना है। तो इसलिए ये इट्स एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ, ये मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ, एक एंटर किया स्ट्रिंग आ गया, टाइप ऑफ 5 नंबर आ गया, टाइप ऑफ ट्रू नंबर आ गया, बूलियन। ठीक है जी, तो टाइप ऑफ बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है
जब आपको श्योर ना हो कि डेटा टाइप इस पर क्या चल रही है, तो आप उसको टेस्ट करके और फिर उसकी बेस पे you can build your logic. Okay, so it ends today's lecture. Any questions? कोई क्वेश्चन है तो बता दें। आपको मैंने डेमो, विजुअल स्टूडियो कोड का भी डेमो दिखाया है, क्रोम का भी डेमो दिखा दिया है, और बेसिक सिंटैक्स बता दिया है, डिफरेंसेस बिटवीन सी एंड जावास्क्रिप्ट जो भी अभी तक आए हैं वो भी आपको बता दिए हैं, सो दैट यू कैन मेक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो कोई है क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये है कि दिस वाज फोर्थ मेकअप क्लास। फोर्थ मेकअप क्लास का मतलब है कि 2 वीक्स की मेकअप क्लासेस आज पूरी हो गई हैं। लेकिन ईद का एक वीक हमारा मिस हो गया था, तो इसकी 2 मेकअप क्लासेस अब और होंगी। सो फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स वी विल कंटिन्यू ट्यूसडेज लेक्चर एज वेल। तो दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म यू। आपका असाइनमेंट स्टाइल शीट की असाइनमेंट अपलोड हो गई होगी मेरे ख्याल में, और इसको आपने करना है। एक आपकी जावास्क्रिप्ट की असाइनमेंट होगी, कोशिश करूँगा छोटी बनाऊँ ताकि ज़्यादा बर्डन ना आए आप पे, ठीक है जी, ताकि आपको बेसिक सिंटैक्स का थोड़ा सा आपका हैंड ऑन हो जाए। ओके जी, तो कोई क्वेश्चन है, गिला शिकवा बताइए, कोई मसले मसाइल? सर ये इस समर में ना तो इंशाल्लाह इंटर्नशिप करनी है, तो सर आप कोई है मतलब आपको कुछ सर कंपनीज वगैरह का बता दें। मैं चाहता हूँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर करो तो। अच्छा चलो देखूंगा मैं, ठीक है। मेरे साथ करनी है कोई आपसे, एफबीएस का सॉफ्टवेयर पे काम करो। एफबीएस ना हमारी ये होता है कि एफबीएस जब होती है ना, एफबीएस मीन पता ही है ना आपको एफबीएस क्या होती है? इससे वो जो तो मीटिंग होती है। हाँ, मीटिंग ही होती है। मीटिंग में ना सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले किया जाता है, और वो सारा कोई 150-200 स्लाइड्स बनती हैं, 150-200 स्लाइड्स बनती हैं पावर पॉइंट में। वो सारा डेटा उठा के एग्ज़ाम के डेटा, प्रीवियस रिकॉर्ड और जीपीए और स्टूडेंट्स के और क्लास के एवरेज जीपीए, मतलब सारे नंबर्स सारे उसके अंदर डाल के एक्चुअली क्लर्क बैठ के डेटा फीड कर रहे होते हैं डिस्कशन के लिए। तो एक बनाया जा सकता है, शायद इंटर्नशिप में कंप्लीट ना कर सकें हम, बट यू कैन आल्सो टेक इट एज लेटर ऑन, यू कैन टेक इट एज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी अगर लेना चाहें तो, ताकि वो कंप्लीट कर लें उसको। लेकिन दैट विल बी अ ग्रेट सर्विस टू ईएमई कॉलेज। बाकी बाहर कोई करने का हुआ तो बताना, फिर बाहर भी देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर, शुक्रिया। चलो सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़। आपके सर।